हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम जो है एक स्पेशल और हटके टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया है। और हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप यूएस का वीजा लगवाना चाहते हैं जकार्टा से, इंडोनेशिया से, तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है उसका। तो मेरे साथ हैं आज एक स्पेशल गेस्ट कबीर गुप्ता, हु इज अ डिजिटल नोमैड एंड ट्रैवल फ्रीक। और उनका इंट्रोडक्शन मैं उन्हीं को देने दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आज इनसे हम डायरेक्टली जानेंगे इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने विटनेस किया है। और फाइनली द गुड थिंग इज कि इनका यूएस का वीज़ा लग भी गया, इनको मिल गया है। तो उसके बाद हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो कबीर, वेलकम टू अवर चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप? Hello, Asim. I'm all good. Currently I'm in Jakarta. Nice. As you said, I'll start with my introduction. So I'm a digital nomad. Digital nomad is almost like a fancy word. I Yeah. am just a traveler who just loves to explore things and travel for not for a short period of time, but for as long as I can sustain it. Mhm. So yeah, that's what I am. I'm a traveler, more sort of a traveler, but in a new terms. When how people and society likes to call us is, yeah, you can call me a digital nomad, but I call myself as a traveler. Yeah. ऑसम। ऑसम। तो कबीर, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको यूएस का वीज़ा मिल गया। और आज इसी बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि और सक्सेस स्टोरीज भी सामने निकल के आएँ। तो आई होप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट देम बिफोर वी बिगिन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। सो कबीर, ऑल ओवर टू यू। अब आप कैसे, कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? आपकी इंडिया से लेके जर्नी जकार्टा तक की और वीज़ा मिलने तक की कैसी रही? So simple logic was like as an Indian passport holder, it's very difficult to travel to like so many countries, and also transit सबसे difficult होता है transit process कि करेक्ट। हम बहुत बार हमें सस्ती फ्लाइट मिल रही है, बट हमें उस जगह जाने के लिए ट्रांजिट करने के लिए ही हमें पहले अप्लाई एम्बेसी जाना, ये चीजें करनी। तो that's why I wanted, and US visa gives you 41 countries, and simple point of US visa is they will main key point of US visa is they will give you, even if you ask for 10 days or 15 days, they're going to give you for 10 years. That's a that's like a it's a protocol. Even if you ask them for 10 days of visa, they will not like not like unlike Schengen, they will not give you 10 days, 15 days, 1 month of visa or 2 months of visa. No, 10 days of visa will also give you 10 years of visa. 22 months of visa will also give you. Even if you apply for 2 months of visa, you will all, even then you will get it for 10 years of visa. But ओके। coming, and again, validity would be 10 years, but you cannot stay in US for more than 6 months. Anyway, so एट अ let's स्ट्रेच। start with the process. At a stretch. Sorry, You can't stay in at a US stretch. at a Yeah, stretch. Okay. yeah. In one stretch, you cannot be there for more than 6 months, Okay. like that. Yeah, Okay. and So the validity is 10 for 10 years. 10 years of validity. But again, the validity, I suppose that it depends on your passport validity or the end date of your passport expiration date, right? No, it's not. Again, I'm not sure about that because Mera passport, this is my second passport, and I got it in 2023 only. This year only. This I is my see. second passport It's your because my fresh first passport. passport, this is my fresh passport because my first passport got expired. Okay. Uh, so simple logic is there are three things they want to know. Number one is ties to the home country. Okay. Number two is financial stability. Okay. And number three is your you like how many countries have you traveled before this? So your history, travel history, financial stability, and ties to the home country. These are the three things they are looking for. With whatever things you answer and say, if these three things are validated, you'll get a visa. So this is the end process, but let's start from the first beginning process. So simple point is you apply for your DS-160 online. You can apply it anywhere and get the date for whatever date you're getting, get it for like, let's say, and again, you cannot just apply in Jakarta. You can also apply it anywhere. For example, there's a list of countries that I figured out. For example, Cambodia, you can do it. Hanoi में you can do it, Ho Chi Minh में you can do it, South Korea में you can do it. There are many countries, but ये जो countries मैं बता रहा हूँ इनमें dates बहुत कम, मतलब इनमें जो अपॉइंटमेंट का वेट टाइम है, आप वेट टाइम का जो लिंक है वो आप एक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना. बट दैट वेट पीरियड करेंटली फॉर नाउ इज वेरी लेस एंड कंपेयर्ड लाइक इंडिया से जो कंट्री सस्ती हैं जाना, अलॉन्ग विद दैट उनका जो वेट टाइम कम है.
जो 4 या 5 कंट्री, 3-4 कंट्री बता रहा हूँ, वन इज वियतनाम, हनोई एंड होचिमिन में, नंबर 2 इज जकार्ता, नंबर 3 इज कंबोडिया। ये 3 कंट्रीज में वेट टाइम, और साउथ कोरिया और सिंगापुर भी है, बट साउथ कोरिया सिंगापुर अगेन इज एक्सपेंसिव टू ट्रैवल and yeah, expenses, and also not very convenient to travel. But Cambodia, Vietnam and Indonesia, these 3 countries are very easy to get the visas, and lamba period भी मिल जाता है, तो not a problem. And to these 3 countries, and also इनमें time wait period is less than 1 month. In तीनों countries wait period is less than 1 month. So there are 3 things to consider. Number 1 thing to consider is you can reschedule your appointment up to 3 times for free. Okay. You don't need to, like, आपने for example आज आपने सबसे पहले, now let's start with the process. The process is, number 1, you have to fill the DS-160 form. Even if you don't fill it completely, थोड़ा बहुत आपने भर दिया, आपको एक application number मिल जाता है. That application number you have it with you. Second thing is, once you have your application number, set your pay for the visa. And once you've paid for the visa, they'll ask you for like what appointment, like, and choose the country that you want to. Again, once you've chosen the country cannot be changed, or the embassy cannot be changed, but the date can be changed. Date can be changed 3 times. अगर हमने 3 times date हम change कर सकते हैं, पर अगर आपने एक बार आपने कंबोडिया, जकार्ता या कोई भी कंट्री या कोई भी एम्बेसी चूज कर दी, आप एम्बेसी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. लाइक दैट. सो हमने एक बार कर दिया, उसके बाद में पहले हमने DS-160 थोड़ा भर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया, उसके बाद में आपने एम्बेसी चूज कर ली. लेट्स हम फॉर एग्जांपल इस बार के लिए हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं जकार्ता. जकार्ता आपने अप्लाई कर दिया, एंड और आपने फी पेमेंट कर दिया. फी पेमेंट आप खुद नहीं कर सकते, आपको कोई इंडोनेशियन लोकल चाहिएगा जो करेगा. जिस कंट्री में जाने लगे अपॉइंटमेंट ली, उसी कंट्री का लोकल पेमेंट कर सकता है. लोकल पेमेंट कर सकता है, एटलीस्ट फॉर इंडोनेशियाज केस. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में समझें, तो इंडिया में फोन पे पेमेंट कौन कर सकता है? यूपीआई आईडी की बात नहीं कर रहा. अगर फोन पे का पेमेंट है या पेटीएम का पेमेंट है, वो आई एम प्रीटी श्योर कोई जकार्ता वाला आदमी या फिर चाइना का आदमी तो इंडिया में पेमेंट वो यूज नहीं कर सकता एप्लीकेशन, राइट? वेरी सिमिलर वे उनके लिए. बट एनी इंडोनेशियन और उस कंट्री का, दैट they won't take more than 1 minute to do your payment. It is very easy for them to do the payment. Just like हमारे लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करना is like with a blink of an eye you can do it. ओके. बट इसका जो सोल्यूशन क्या है कबीर? जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई लोकल बंदा पेमेंट कर सकता है, तो वहां पे कोई एजेंट्स या स्पॉन्सर्स या गारंटर्स बैठे हुए हैं जो कि पेमेंट करते हैं आपके बिहाफ पे, उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है? आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक इन जनरल. उनको कैसे करना पड़ेगा? Me as a traveler, मैंने तो I have got friends all over the world. So I knew somebody that I met in Laos, and this guy was from Bali. So I asked him, and I trusted him. So I sent him the money by Wise. You can send it by PayPal, Western Union, whatever. Once you send that person the money, and that person can give you, like, do your payment on your behalf. Do the payment on your behalf. Once that is done, I think this is the only thing जहाँ पे शायद आपको प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है in general. Because मुझे बिल्कुल नहीं आई, because or if not for that, if you are on couch surfing, तो couch surfing में I have got a lot of friends जो कि I could have contacted them. प्रोफाइल में समझ में आ जाता है कौन genuine है कौन नहीं है. So if you can just take that one small risk, that is the only risk that is there. But risk भी नहीं यार. If you can, nobody would do anything. Like if there's a genuine person, कोई 12, 15, 20, 17 हजार रुपए लेके क्या कर लेगा? नहीं सोचेगा, right? So that I did, and because I knew that person already. I just met him once. Not like he is like a long lost friend, but I just met him once, and I understood that is a genuine guy. So I just sent him the money. He paid for me. Less than 1 minute, payment was done. Sent me the screenshot. I put that. There's a virtual account number that you get, payment ka code. You put that payment code in that. Yes, I have paid the fees. After that, you apply for, like, you complete the DS-160 form. And आपने पहले तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर लिया. अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद DS-160 आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि DS-160 आपको पूरा भर के ही आपको फिर अपॉइंटमेंट लेनी है. अच्छा. DS-160 बेसिकली देयर एप्लीकेशन फॉर्म, यूएस का एप्लीकेशन फॉर्म in which all your details are filled online. Correct. Okay. So again, let's summarize this. पहले आपने DS-160 थोड़ा सा भरा, बेसिक डिटेल्स डाली. आपने बेसिक डिटेल्स डालने के बाद में
एक फॉर्म का DS-160 का नंबर आता है, फॉर्म अकाउंट नंबर, तो रजिस्ट्रेशन आपने नंबर। ले लिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर था वो ले लिया। वो आपको अपने अपॉइंटमेंट के उसमें डालना है। ओके। अपॉइंटमेंट जब आप ले रहे हो ना, आप अपॉइंटमेंट में उसमें डालना है। करेक्ट। उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने पेमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट ले लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में, अब बाद में, क्योंकि DS-160 बहुत लंबा फॉर्म है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फिल इट। अब फोटो भरनी है, फोटो स्पेसिफिकेशन की फोटो होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो यू कैन डू इट लेटर, बट फर्स्ट पॉइंट इज गेट द अपॉइंटमेंट, सिंपल, वट एवर डेट इट इज, जस्ट वट जो आपको अर्लीस्ट डेट मिल रही है, जो आपको लग रहा है कि दैट इज द मोस्ट टेंटेटिव डेट, की ये मेरे लिए सही है करके, तो ये वो ले लो। जरूरी नहीं है कि आप उसी डेट पे जाओगे। आप when the date comes closer or your travel plan becomes fixed, उस टाइम आप चेंज कर लो आपके अपने अकॉर्डिंग। जब आप जकार्ता पहुंच रहे हो, जब आप फ्लाइट ले चुके हो, तब बाद में चेंज कर लो, लेकिन पहले आप जो डेट मिल रही है वो ले लो। लेके, एंड अगेन इट्स नॉट लाइक इंडिया की आपको 500 दिन 400 दिन वेट करना पड़ रहा है, टेलीग्राम के चैनल्स पे चीजें करनी पड़ रही हैं। इट्स जस्ट दैट इट्स देयर, यू बुक इट एंड ऑल यू नीड टू डू इज कम। एंड अगेन, so now I'll tell you my story. I did not straight away travel to Jakarta from India. I was anyway traveling. I was in Laos, then Thailand, Laos, then again Thailand. Then I was in Vietnam. Then Vietnam से I came in Phuoc. There was a island called as, जहाँ पे हम मिले थे. So actually हम लोग me and the Asim, we both met in Phuoc. That's when we actually first met. I've been like, yeah. So we went from Phuoc. I went to Jakarta. Okay. So now I see, if you as an Indian, you simply travel from India straight away to Jakarta without going anywhere, that raises a very big red flag. That why is it so important for you to come to Jakarta straight away and apply from Jakarta, as in from Indonesia? So the idea could be that you are traveling to a couple of countries, couple maybe two. Easiest could be simply from India, take a flight to Malaysia, stay in Malaysia for 2-3 days, 4 days, and then from there you can come to Jakarta and apply for it. Okay. That's the easiest. But I would prefer I would suggest you have a couple of countries in your passport, and so that makes you a genuine traveler, right? That makes you then apply for your US visa, and not like आपका fresh passport है या 1-2 country है, 2-3 country है और आपने US visa apply कर दिया. आप should seem as a genuine traveler. If you are a genuine traveler, good, like me. If you are not, that is up to you. But simple point is, you should seem as a genuine traveler. It should not feel like the officer should not feel like this person has straight away traveled from India and has come to Jakarta to apply for the US visa. So then they'll be asking you, what was so urgent for you to? I'm not saying that you cannot do that. You can do that as well. India से Jakarta सीधा जाओ और apply कर दो. But they will simply ask you what was so urgent for you to come straight away fly to Jakarta and get it from Indonesia. Right. That raises a big red flag up. Now, if you can justify the reason ki why was it so urgent for you, then good enough. But in my case, I could, if I did that, there was a big chance of not me getting my visa getting denied. So yeah. So I would recommend कि आप 1-2 कंट्री या तो मलेशिया चले जाओ, मलेशिया में 2-3 आइडियल थिंग इज इंडिया से आप मलेशिया जाओ, मलेशिया की फ्लाइट्स काफी सस्ती हैं. You can मलेशिया से stay in Malaysia for 5 days, maybe also go to Singapore 2-3 days and then come to Jakarta. Then go to some other country. आप अगर कंबोडिया से कर रहे हो, वियतनाम से कर रहे हो, do not fly to Vietnam or Cambodia or Jakarta or wherever you are getting your visa from, your interview from. Do not fly to that country straight away. That would make them raise, or that would raise a big red flag, couple of red flags, and they will increase your chances of rejection. And again, have a couple of countries in your travel history, then apply for the US visa, because once, what I've heard is, मेरा कभी deny नहीं हुआ, but what I've heard is, because 1-2 दोस्तों का हुआ है, so once they deny you, the next time it's more difficult to get it. Once they deny, because the simple logic is, if some other officer has denied, they might have thought about it. आपने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करा कि उन्होंने डिनाई कर दिया, और
सिंपल लॉजिक इज, एक बार आपका डिनाई होता है तो नेक्स्ट टाइम आप यू इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट। करेक्ट। बेटर टू व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर इन वन, लाइक एक बार आप कर रहे हो तो यू बी वेल प्रिपेयर्ड, एंड आपके सारे ऑल द डॉट्स शुड बी कनेक्टेड। इट शुड नॉट लाइक योर डॉट्स आर नॉट अलाइंड टू ईच अदर, द डॉट शुड बी कनेक्टेड, you should be well prepared, easy, done. नाइस। And it, yeah, okay, yeah, so yeah, you please continue, yeah. तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू रिवाइज की ट्रैवल हिस्ट्री इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रैवल हिस्ट्री को आप सामने रखें। पहली बात तो यह, यू मस्ट हैव विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी ट्रैवल हिस्ट्री काम आ रही है कि अगर आप डायरेक्टली फ्लाई करते हैं और वहाँ जाके अप्लाई करते हैं तो बहुत साफ है कि आप वीज़ा लगवाने के लिए आए, इंटेंशंस के लिए आए, वही आपके इंटेंशंस है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रहती है, बीच में आप थोड़ा सा घूम के जाते हैं सीधा, तो आप कह सकते हैं कि आप ट्रैवल के पर्पस के लिए वीज़ा मांग रहे हैं यूएस का।